जय श्री राम भाई लोग। आज के जो कि ब्लॉग में हम आपका स्वागत करते हैं। सभी लोग को पता है कि भाई हमारी SSC CGL की जो कि नोटिफिकेशन निकल चुकी है, फॉर्म जो है कि फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 महीने हैं बस पेपर के, और मैंने जो है कि तैयार किया है अपनी एक स्ट्रेटजी। लगभग 1.5 घंटा लग जाता है हमें इस स्ट्रेटजी को रेडी करने में, और 10:30 बजे के आसपास जा कर के मेरा ये तैयार होकर निकल लेता है। यू कैन सी। इस बार जो है कि हमने एक्सेप्ट टास्क आई जस्ट फील लाइक दिस कि फर्स्ट वीक में हम लोग को ये करना है, एंड दिस इज़ द शेड्यूल ऑफ डे कि हम लोग जो कि कौन से टाइम पे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आई जस्ट स्टार्टेड येस्टरडे, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टडी इंग्लिश, जिसमें जो कि हमारा पहला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। काफ़ी सिंपल टॉपिक होता है ये, एंड आई हैव लर्न इट वेरी बिफोर, so that it is going to be finished very soon. I was feeling asleep, so first of all I gave thanks to the God that he gave me dare, and I keep my learning further. I started to learning the history. After 20 to 25 minutes I going to be sleep. In morning time I woke up at 4:40. First I did worship the God. I thanked to the God for all the things. Then I wore my shoes and I went to the running ground. Me and my friend, then we all did exercise together. After that I came to my home. Then I had a bath. After that I had my breakfast. Then I looked at my timetable, so at 7 to 9 I have to read the English subject, in which I am going to read the subject verb agreement. After read 2 hours I closed the English subject, and then I started to solve the reasoning problems. I finished my reasoning class. After that I had finished my maths class, and then in evening time I went to take the coachings. After that I started again math, but in evening time I had lots of work, so therefore I am not able to study.